A renewable energy company has signed rupees 209 crore battery storage project in Tamil Nadu and also received a letter of intent recently worth rupees 98.6 crore for a solar EPC project in Bihar. कंपनी का टारगेट है FY26 तक अपनी रेवेन्यू को 2.5x तक ग्रो करना along with expansion into hydrogen and e-fuels. Meanwhile, a footwear manufacturer is scaling up capacity by setting up a new unit that will add 1.5 million pairs annually. FY26 में कंपनी स्पोर्ट्स फुटवेयर सेगमेंट में एंट्री प्लान कर रही है to diversify its portfolio and tap into higher growth categories. Stay tuned to learn more about these two high potential businesses. Hi and welcome to another exciting edition of Noisemaker, जहां हम चीजें सिंपल रखते हैं, फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो अक्सर स्पॉटलाइट पे नहीं होती but have strong potential to deliver in the long run. I am Nishant, Equity Research Analyst at Desvelado Advisory, और आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जो अपने बिजनेस में सॉलिड प्रोग्रेस कर रही है and if current trends continue, they might continue to grow even further. But before jumping to the companies, let's see the disclaimer first. Any discussion, facts or writing provided are for information purposes only and do not constitute a buy or sell recommendation. Please conduct your own due diligence before making any investment decision. So, let's start with the first company, Oriana Power Ltd, जो बेसिकली काम करती है मेनली दो वर्टिकल्स में. पहला कंपनी EPC सर्विसेज प्रोवाइड करती है यानी कि सोलर पावर प्लांट्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस हैंडल करती है. दूसरा कंपनी BOOT मॉडल पे काम करती है, मतलब ये खुद सोलर प्रोजेक्ट बिल्ड करती है, उन्हें ओन एंड ऑपरेट करती है और कुछ साल बाद क्लाइंट को ट्रांसफर कर देती है. इन शॉर्ट ये कंपनी सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस दोनों तरीके से देती है, सर्विसेज के थ्रू भी और खुद के प्रोजेक्ट से भी. द कंपनी हैज रिसेंटली साइंड अ रुपीस 209 crore agreement with Tamil Nadu Power Distribution Corporation to supply and operate a 50 megawatt and 100 megawatt grid scale battery energy storage system BESS at Karaikudi. ये प्रोजेक्ट जिसको रुपीस 27 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है 18 मंथ्स में कंप्लीट होने वाला है and will allow the company and will allow 2 charge discharge cycles per day for a grid support. ये कॉन्ट्रैक्ट टैरिफ बेस्ड बिडिंग के थ्रू मिला है and adds to the company's growing battery storage portfolio. जो FY26 तक कंपनी का रेवेन्यू का approximately 20% contribute करेगा. With this win, the company moves closer to its FY26 revenue target of rupees 2,000 to 2,500 crore, which is nearly 2.5x of company's current FY25 revenue. कंपनी का प्लान है कि इस ग्रोथ का 80% EPC बिजनेस से आए while gradually building long-term value from BOOT based solar assets. The project also aligns with broader goals of reaching 1 gigawatt solar and 1 gigawatt BESS capacity, ensuring better cash flow visibility and stable margins. Now coming to the numbers, in FY25 the company recorded a sharp revenue growth of 157.8%, rising to rupees 987.2 crore. Quarterly revenues improved sequentially with Q4 FY25 reaching rupees 627.6 crore, up from rupees 359.5 crore in Q3. The company also improved profitability, posting an EBITDA of rupees 245.4 crore in FY25, resulting in a margin increase from 21.9% to 24.9%. Net profit also nearly tripled to rupees 158.6 crore from rupees 54.4 crore last year, with net margin expanding to 15.9% from 14.1%. Now, going forward, the company is targeting to build a 6 gigawatt solar EPC, 2.5 gigawatt IPP, and 3.5 gigawatt battery storage portfolio by 2030. ये प्लान सपोर्टेड है by secured land bank, 15,500 rupees crore का state level MOUs, long term power purchase agreements PPAs and smart energy management systems जो enable करते हैं integrated solar plus storage solutions offer करना. इसके पैरेलल कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और ई-फ्यूल स्पेस में भी एंट्री कर रही है, जिसका टारगेट है 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी एंड 1 MMTPA ई-मेथनॉल प्रोडक्शन बाय 2030. इस इनिशिएटिव को सपोर्ट मिल रहा है एमपी में गीगावाट फैक्ट्री लैंड एलोकेशन से, इनिशियल सब्सिडरी अप्रूवल से और इंटरनेशनल बायर्स जैसे जापान, यूरोप, यूएस के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट से, जो कंपनी के एक्सपोर्ट मार्केट्स
टैप करने और रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड कंपनी दैट वी आर कवरिंग, लेहार फुटवेयर लिमिटेड, जो एक मास फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, यानी अफोर्डेबल फुटवेयर लार्ज स्केल पर बनाती है। साथ ही कंपनी अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मैनेज करती है, मेनली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में। इनका फोकस है बजट फ्रेंडली फुटवेयर बनाकर वाइड कस्टमर बेस तक पहुंच बनाना, रीच बनाना। द कंपनी is recently starting commercial production at its new manufacturing unit in Sonipat, Haryana from July 10, 2025, set up with an investment of rupees 10 crore fully funded through internal accruals. ये प्लांट phased manner में 15 lakh pairs per year की additional capacity add करेगा. This is part of the company's larger plan to scale product production to 3.9 crore pairs annually. Expansion का main objective है rising demand को address करना, especially in sports and casual footwear categories, both domestic and export markets के लिए। By increasing in-house capacity, कंपनी अपनी प्रोडक्शन कंट्रोल इम्प्रूव कर रही है, थर्ड पार्टी वेंडर्स की डिपेंडेंसी कम कर रही है और एफिशिएंसी और मार्जिन दोनों एनहांस करने का प्लान है, स्पेशली इन द फास्ट ग्रोइंग नॉन लेदर ब्रांडेड सेगमेंट। Now talking about the financials, company posted a 42.7% rise in annual revenue, reaching rupees 277.2 crore in FY25. Q4 FY25 revenue stood at rupees 109.5 crore, a sequential increase of 63.6% over Q3. EBITDA for FY25 rose to rupees 26.7 crore, up from rupees 18.4 crore, with margin holding steady at 9.6%. Net profit also increased to rupees 10.8 crore in FY25 with a net profit margin of 3.9%. Looking ahead, the company is set to enter the closed footwear segment in FY26 with the launch of sports shoes। अपनी करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बियॉन्ड एक नया कैटेगरी ऐड कर रही है कंपनी बेसिकली। साथ ही कंपनी अपनी डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रेंथन करने के लिए एक्टिवली काम कर रही है बाय इन्वेस्टिंग इन इट्स ओन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड कोलैबोरेटिंग विद मेजर ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस। ये इनिशिएटिव्स का गोल है कस्टमर रीच बढ़ाना, डायरेक्ट एक्सेस इंप्रूव करना और सेल्स ग्रोथ ड्राइव करना अक्रॉस बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। Now let's review some of our peers that we have. Inox India up 7.5%, Axiscades Technologies Limited up 11.3%, ICRA Ltd, which we covered, up 3.1%. Next, NIBE Ltd, which we covered, is down by 3.2%, and the last company, Antony Waste Handling Cell Limited, up by 5.8%. Now, for your reference purpose, you can scan the QR of all the companies that we have covered in the past, so that you can check the historical data. Now let's see the summary of today's recent filing, which includes Oriana Power Ltd. Company has signed a rupees 209 crore battery energy storage purchase agreement with Tamil Nadu Power Distribution Corporation Ltd for a 50 megawatt and 100 megawatt grid scale BESS at Karaikudi, backed by rupees 27 crore viability gap funding. And Lehar Footwears Ltd, on the other hand, company has set up a new unit for manufacturing of footwear at Sonipat, Haryana with an investment of rupees 10 crore, and commercial production is set to begin on 10th July 2025, funded entirely through internal accruals. This unit will add 15 lakh pairs per annum in phases, contributing to the company's broader goal of scaling up total manufacturing capacity to 3.9 crore pairs annually. So that's it for today's edition of the Noisemaker. अगर आपको ब्रेकडाउन अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो you can scan the QR to read the full report. We will be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed, and stay ahead.